गौरवशाली परिसर में आयोजित आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करते हुए गौरवान्वित है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरी ऊर्जा और ऊष्मा के साथ हम स्वागत करते हैं और साथ ही मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों का भी ऊष्मापूर्ण स्वागत करते हैं। We also take this opportunity to welcome all dignitaries from across the globe, members of parliament, honorable ministers from the state and center, officials from center and state governments, regulatory authorities, broker-dealers, CEOs of foreign banks and other financial institutions, and members of print and electronic media. We are honored to have Governor RBI and other senior officers and stakeholders from around the globe joining us virtually. आज के इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्मृति चिन्ह अर्पण कर स्वागत करेंगे। We invite Mr. Lohboon Chai and Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO NSE India, to jointly present a memento to Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. Thank you, sir. We request Shri DJ Pandian Thank you, sir. We request Shri DJ Pandian, Head, Indian Regional Office of NDB, to present a memento to Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Dhanyavad. We now request Mr. Bernard Mensah, President of International Bank of America, to present a memento to Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Thank you, Madam. May we request Shri Ashok Gautam, MD, India International Bullion Exchange, to present a memento to Honorable Minister of State, the Ministry of Finance, Shri Pankaj Chaudhary. Thank you, sir. We now request Shri Sandeep Mehta, CEO, NSE IFSC, to present a memento to the Honorable Minister of State in the Ministry of Finance, Dr. Provide Currunt ji. Dhanyavad. May we request Shri V. Balasubramaniam, MD and CEO, India International Exchange, IFSC Limited, to present a memento to Honorable Minister of Finance, Energy and Petrochemicals, Government of Gujarat, Shri Kanubhai Desai. Thank you, dignitaries. कार्यक्रम के आरंभ में मंच पे विराजमान भारत के गौरवशाली युग पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे साथी भगवत कराट जी एवं वित्त मंत्री गुजरात सरकार श्री कनुभाई देसाई जी का मुझे इस
भव्य सभा को संबोधित करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर गिफ्ट के चेयरमैन, IFSC ए के चेयरमैन, MD और CEO गिफ्ट सिटी और सभी सहकर्मियों को गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को आकर और गति देने के लिए बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिफ्ट सिटी की परिकल्पना युग को देखने की क्षमता रखने वाले भारत के गुज़श्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तत्कालीन कार्यकाल के दौरान की थी। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष क्यों कहा, क्योंकि भारत के राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने वो लक्ष्य चुना जिसे उस समय दिवा स्वप्न कहा जा रहा था। और किसी व्यक्ति की क्या कहूं, भारत सरकार तक में किसी ने भी कभी वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में नहीं सोचा था। मात्र एक तथ्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और आपके समकक्षों से बेहतर नायक होने को सिद्ध करता है। लाइसेंस राज की अंतिम जंग लगी बेड़ियों को तोड़ते तोड़ते आज सिंगापुर, हांगकांग अथवा लंदन वित्तीय सेवा केंद्र के समान, साथ ही तकनीकी रूप से उन्नत केंद्र की स्थापना को इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब गिफ्ट सिटी पूरी क्षमता से कार्य करेगा तो अब आपके अन्य कई कार्यों के अलावा मात्र एक यह कार्य ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष के रूप में स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी IFSC का उद्देश्य भारत को वैश्विक वित्तीय प्रवाह के एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना है, जिसमें कि आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक पटल पर भारत की कीर्ति को स्थापित किया जा सके। आम आदमी की भाषा में मैं कहूं तो वो हमारे वित्तीय सेवाओं संबंधित काम जो भारत के लोग ही और कंपनियां जाकर विदेशों में करते थे, उन्हें अब सिंगापुर या हांगकांग इत्यादि नहीं जाना पड़ेगा। वो सारी सुविधाएं, वो सारी सेवाएं जो उन्हें वहां मिलती थी वह उन्हें भारत में ही मिलेगी। साथ ही विदेशों से भी लोग आएंगे और वित्तीय सेवाएं प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का शिलान्यास, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IFSC का सिंगापुर ग्लोबल एक्सचेंज कनेक्ट का शुभारंभ और आज के आयोजन के लिए अन्य घोषणाएं गिफ्ट IFSC की यात्रा में मील का पत्थर है। गिफ्ट IFSC में आत्मनिर्भर भारत की सच्ची परिकल्पना को साकार होते हुए मैं देख रहा हूं। मैं पुनः युग दृष्टा और नए भारत की सृष्टि करने वाले नव भारत सृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने गिफ्ट सिटी का जो सपना देखा उसे तमाम कठिनाइयों के बावजूद साकार करके ही दम लिया। आपको इसलिए भी कोटि धन्यवाद, क्योंकि आज का ये आयोजन भारत को वैश्विक वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में ध्रुव तारा के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। भारत सरकार की माननीय मंत्री महोदया, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत के सपने को साकार करते कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रगतिशील निर्णय लिए हैं, ऐसी भारत की प्रबुद्ध महिला वित्त व कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। Respected Prime Minister, Chief Minister of Gujarat, my colleagues in the Union Cabinet of Ministers, Finance Minister of Gujarat, distinguished invitees, many of whom I find have come from distant lands, and all dignitaries. I'm extremely happy to be here today when the Gift City will be marking some very important milestones. My colleague, speaking in Hindi, elaborated on what exactly
is the gift city and how it came about. I would like to take a minute to say about how, from among the several visionary things that Honorable Prime Minister, then as Chief Minister in Gujarat, had initiated. They were visionary from very many different angles as well. As much as making Gujarat, which is in a semi-arid area, also bounded in the west coast by a marshy, salty desert, took initiatives to make sure the groundwater table of the state improved. Similarly, very many different projects which brought about an inclusive growth, whether it is girl-child education or looking at improving the nomadic population of the state. He had taken very many steps, progressive as you would want to label them, such steps which made this state to stand out. And there was a time when writers wrote about how Gujarat's growth, inclusive as it was and progressive as it was, matched up with very many different developed countries as well. We are talking about Gujarat, which is a province within India, but distinctly because of the ways in which governance happened in the state, we saw that it was being pegged to be compared with very many developed countries. Similarly, one of the very visionary and futuristic steps was to dream about having a global financial services center. Now, some of the steps obviously pertain for improving Gujarat. There are several other steps which were taken by the Honorable Chief Minister then and the Prime Minister now, with India as its focus. The steps were taken in Gujarat, but its impact was for entire country, and some of which obviously have a global bearing as well. And one such an example of a province chief minister taking a step which has a milestone impact on the country and also stands out as one of the prominent futuristic milestone step taken, which is the global financial hub, which is being set up, and today it is about to achieve 3 major milestones. Now, as a result, today, from the time when it was conceived till today, because of consistent, steady support from the then Chief Minister and later the Prime Minister and now the Prime Minister, Gift City today is recognized by the Global Finances Cities or Global Financial Centers Index, which is something which is located in London, recognizes global financial centers all over the world and has placed Gift City as very progressive and with full of potential for the next 2 or 3 years. So that is the level to which Gift City has grown in the last 5-6 years. And because of that, today we see that in every segment of the financial sector, IFSC today has made good progress, whether it is banking, whether it is capital, whether it is looking at fintech or funds, and looking at insurance. In banking sector alone, in the last 2 years, the total assets have become doubled. Today it stands at $32 billion US. Similarly, in funds, venture capitalists, private equity funds, or hedge funds, all of them are looking at this jurisdiction for pooling of global funds that can be invested in India. And therefore, I feel very proud to say in the last few years, Finance Ministry, Government of India, has actively engaged with the Gift Cities authorities people and made sure rapidly that this center would develop and achieve
all the goals it should aim at achieving. Now we are at 75th years of India's independence. Prime Minister of India has set a vision for the next 25 years of progress, so that when India is at 2047, 100th year of India's independence, all aspirations will be well met. And in that, I would place the IFSC's role at the very center for India's progress towards India at 100. And therefore today, this meeting, in which 3 major milestones are being inaugurated by Honorable Prime Minister, I'll just very quickly list them out for you. The India International Bullion Exchange is a major step, and I would think India being the second largest consumer, importer of gold, we will have a better price negotiation strength with the launch of this bullion exchange. And the second milestone, which is getting inaugurated today, is the NSE, the National Stock Exchange, IFSC, and SGX, the Singapore Exchange Connect that we are bringing in. The IFSC shall work as the connect, in the sense cross-border bridging will happen so that capital markets will have greater operability between India and Singapore. And thirdly, and the final point, is the Honorable Prime Minister will be laying the foundation stone for what would be the IFSCA, that is the International Financial Services Center Authority's headquarters foundation stone. So, without taking much more time of yours, it is a momentous and historic occasion when 3 major milestones are being launched today. Prime Minister, who had actually sown the seed of this center, today is here. I'm very grateful that he's given us this time to launch these 3 major initiatives, and there are more to come in the near future. So I wish the Gift City and the IFSCA authority all the very best, and for a futuristic collaboration with Government of India, we look forward to working with you. Jai Hind. Thank you, Madam, for that very enlightening address. IFSCA के हेडक्वार्टर्स की स्थापना के लिए गुजरात के ग्लोबल फाइनेंशियल हब गिफ्ट सिटी को चुना गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस महत्वपूर्ण निर्णय से गुजरात गौरवान्वित है और नए भारत के निर्माण में योगदान के लिए कर्तव्यबद्ध है। अब हम गुजरात राज्य के दृढ़ निश्चयी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करते हैं। राज्य की राजधानी की विशेष पहचान गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा आयोजित IFSCA मुख्यालय के शिलान्यास और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर हम सभी के बीच मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर श्री भगवत कराड़ जी और श्री पंकज चौधरी जी, राज्य के मेरे साथी वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, इंटरनेशनल फाइनेंस तथा फिनटेक से जुड़े संस्था के प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। व्यापार वाणिज्य के लिए सदियों से विख्यात इस गुजरात की वाइब्रेंट धरा पर मैं आज सबका स्वागत करता हूं। गिफ्ट सिटी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है,
आज यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेवाओं के लिए हब बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गिफ्ट सिटी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा गुजरात को दी गई अनमोल भेंट है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इंटरनेशनल तथा फिनटेक की विभिन्न परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। श्री मोदी जी ने गुजरात में वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज तथा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के आशय से वर्ष 2007 में गिफ्ट सिटी की नींव रखी थी। उन्हीं की प्रेरणा से गिफ्ट सिटी आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है और यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं के संस्थान बढ़ रहे हैं। यह इंटरनेशनल फाइनेंस और आईटी के अलावा मैरीटाइम और एविएशन सेक्टर के संस्थान भी काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैरीटाइम और एविएशन सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुल मिलाकर आने वाले समय में गुजरात की यह गिफ्ट सिटी हमारे राज्य को ट्रेड, बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस का ग्लोबल सेंटर बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। समृद्ध बंदरगाहों के कारण प्राचीन समय से ही हमारा राज्य गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता रहा है। मेरा मानना है कि आज के 21वीं सदी के ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स के युग में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यह गिफ्ट सिटी गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा। आईएफएससी का हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं के विस्तार एवं नियंत्रण का केंद्र बनने जा रहा है। आज भारत का प्रथम इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने से गिफ्ट सिटी की सफल यात्रा में एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय सबसे अधिक सोना चांदी खरीदने के लिए जाने जाते हैं। इस दृष्टि से बुलियन मार्केट में भारत को सबसे बड़ा प्लेयर माना जा सकता है। यह बुलियन एक्सचेंज भारत को प्रतिष्ठित स्थान दिलाएगा और इससे हमें बुलियन प्राइस तथा मार्केट को प्रभावित करने की क्षमता भी मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ा प्लेयर बनाने का सपना देखा है। उनके नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हम सब भी भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम गिफ्ट सिटी को और विकास करने की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। 700 एकड़ में फैला इस विशाल सिटी को हम ग्रीन, स्मार्ट और होलिस्टिक सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त 79 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए गिफ्ट सिटी के पास साबरमती नदी के तट पर रिवर फ्रंट विकास के लिए 355 करोड़ रुपए का बजट में हमने आवंटन किया है। गिफ्ट सिटी में कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम स्टॉक एक्सचेंज पर स्टैंप ड्यूटी में 100% रिफंड की सुविधा भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने स्टैंप ड्यूटी को माफ कर दिया है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आपने गिफ्ट सिटी को मेट्रो कनेक्टिविटी जल्द उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो के प्लान फेज 2 में इसका समावेश किया है। गिफ्ट सिटी में मेट्रो ट्रेन कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के साथ हम यहाँ ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की कुल आबादी का मात्र 5% वाला गुजरात देश की अर्थव्यवस्था में 8% से भी ज्यादा का योगदान दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब, सिरामिक हब, डायमंड हब और फार्मास्यूटिकल हब बना है। अब प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम गुजरात को फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज और नियमनकारी संस्थाओं का हमारा आमंत्रण है कि आप आइए, गिफ्ट सिटी के साथ जुड़िए
और व्यापार एवं वाणिज्य के उत्तम अवसरों का लाभ उठाइए। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति गुजरात को यह महत्वपूर्ण भेंट देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। भारत सरकार द्वारा देश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट हेतु स्थापित एकीकृत रेगुलेटर IFSCA की यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा IFSCA के हेडक्वार्टर्स भवन का शिलान्यास गिफ्ट सिटी के इस अत्याधुनिक परिसर में संपन्न होगा। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं कि आप रिमोट पर बटन दबाकर IFSCA हेडक्वार्टर्स भवन का शिलान्यास करें। The Government of India in 2020 established the International Financial Services Centres Authority, IFSCA, as a unified authority for development and regulation of international financial services centres in India. From October 2020, IFSCA has been spearheading the development of the GIFT IFSC. The IFSCA tower, with a built-up area of 3 lakh square feet spread across 27 floors, is envisaged to be iconic, efficient and sustainable with best-in-class modern amenities. It is planned to be a platinum-rated green building and will provide a glorious 360-degree panoramic view. Once operational in July 2024, the IFSCA tower will symbolize the growth and aspirations of new and Atmanirbhar Bharat. बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑफशोर लेन देन को ऑनशोर करने की स्वप्न दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है NSE IFSC SGX कनेक्ट। आइए तालियों की हर्ष ध्वनि के साथ सादर आमंत्रित करें फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप रिमोट का बटन दबाकर NSE IFSC SGX कनेक्ट का लॉन्च करें। Two economies, one pathway to growth. NSE IFSC SGX Connect, a collaboration between India and Singapore, fulfills the dream of our Honorable Prime Minister to onshore the offshore transactions. Guided by IFSC, it's an opportunity for global investors to trade in nifty products. NSE IFSC SGX Connect, the highway to Indian markets. धन्यवाद। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का आज का लॉन्च गिफ्ट सिटी में भारत के प्रथम IFSC की स्थापना के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो भारत को फिर एक बार वैश्विक बुलियन व्यापार केंद्र के तौर पर स्थापित करेगा। तालियों के पूरे उत्साह के साथ फिर एक बार आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप रिमोट का बटन दबाकर IIBX का लॉन्च करें। The Honorable Prime Minister's directive is clear. Make GIFT IFSC exchanges the international price influencer for commodities. IIBX has been set up and will provide an efficient price discovery for bullion, complete transparency, sourcing, integrity, quality assurance and standardization, and is on the threshold of becoming the gateway to India's bullion imports. Setting up of IIBX is an important milestone and will have a transformational impact on the Indian bullion ecosystem. आज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और विकास संकल्प सिद्ध हुआ। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय व साथ ही पधारे
सभी गणमान्य अतिथियों को अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं। आज हमें इस ऐतिहासिक शुभारंभों से साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो तालियों से इस ऐतिहासिक घटना का स्वागत करते हैं। Let's welcome this proud achievement of 3 new beginnings today with a thunderous round of applause. Thank you. On today's special occasion, in the inspiring presence of the Honorable Prime Minister and distinguished dignitaries, IFSCA will formally exchange MOUs with the 4 foreign financial regulators. These MOUs will promote cooperation in the areas of regulation, supervision and development of financial products, financial markets and capacity building with the foreign regulators. We invite Shri Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA, and Shri Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA, for the MOU exchange proceedings. We invite Shri Injeti Srinivas, Chairperson, IFSCA, at the exchange platform. We invite Mr. Simon Wong, High Commissioner of the Republic of Singapore to India, and Mr. Lim Tuang Lee, Assistant Managing Director, Monetary Authority of Singapore, for the exchange of MOU. Thank you, sir. We now invite, on behalf of CSF Luxembourg, Ms. Peggy Franzen, Ambassador, the Grand Duchy of Luxembourg, for the exchange of MOU. Thank you, Madam. We now invite, on behalf of FI Sweden, Mr. Gautam Bhattacharya, Deputy Head of Mission, Embassy of Sweden, for the exchange of MOU. Thank you, sir. We next invite Mr. Prasanna Haran, Special Advisor, Qatar Financial Center Authority, for the exchange of MOU. The next MOU to be exchanged is with the Department of Space. We invite Shri S. Somnath, Secretary, Department of Space, for the exchange of this MOU. This MOU between IFSCA and Department of Space will help unlock immense value for space techs to raise capital and go global. Thank you, sir. आज के इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी की मार्गदर्शक उपस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण शुभारंभों की घोषणा भी की जा रही है। आइए आपको इन घोषणाओं की जानकारी प्रदान करती एक फिल्म दिखाएं। Today, in the august presence of the Honorable Prime Minister, we are proud to International Financial Services Center. The new development bank becomes the first multilateral development bank to establish its Indian regional office in GIFT IFSC. To add to the growing vibrancy of banking ecosystem, 3 foreign banks, namely Deutsche Bank, JP Morgan Chase,
and MUFG Bank will commence their IFSC journey. Bank of America, which became the announces the expansion of their operations to support the bank's global national trade financing platform in GIFT IFSC. Via our trading exchange, RXIL, M1